So, my dear students, we are going to discuss now what earthquake actually is. What is earthquake? So, it is the natural disaster. Okay, we are going to discuss now earthquake. It is the second part of your some chapter, some natural phenomena. Earthquake is the natural disaster. Okay, which is caused. Earthquakes. I will write the definition. Earthquakes are caused by the release of energy by the release of energy that generate waves which travel in all directions causing the shaking of earth's surface. Okay, this is the definition of earthquake, or second definition. An earthquake is an intense shaking of earth surface intense shaking of earth surface. This shaking is caused by the movement of, or I can say by the movement in earth's outermost layer. Okay, beta, this is the definition for earthquake. What are earthquakes? Earthquakes are caused, actually earthquake is an intense shaking of earth surface. हिल जाती है earth surface जो है. This is vibrations. These are actually the vibrations caused due to the movement in the earth's outermost layer, wherein there is a vibrations on the earth's surface, which is quite devastating. Okay, maybe devastating or might not be devastating. It depends upon the magnitude of the intensity of the earthquake, how much intense earthquake is. That we are going to discuss later on. Okay, actually earthquake कैसे काज होता है? It is actually वहाँ पे जो अर्थ के सरफेस, इनर सरफेस में, दैट इज द अर्थ आउटरमोस्ट लेयर दैट्स अर्थ क्रस्ट में ये सारा कुछ होता है. लिथोस्फीयर में सारा कुछ होता है. आपको मैंने पहले लेक्चर में भी डिस्कस करा है कि दिस एक्चुअली अर्थक्वेक ऑकर्स इन द लिथोस्फीयर ऑफ रीजन ऑफ द अर्थ. ओके, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होने से एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, वो फिर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं. दोज वेव्स आर पी, उनको हम पी वेव्स और एस वेव्स कहते हैं. और गेटिंग, वी डोंट हैव टू गो डीप इनटू दैट. उन वेव्स की वजह से क्या होता है? वो वेव्स इन ऑल दे ट्रैवल, दे प्रोपोगेट इन द ऑल डायरेक्शंस, जिसकी वजह से वो वेव्स की वजह से वो शेकिंग, दे हिट द रॉक्स. whenever they hit the hardest part, they hit the rocks, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होती है अर्थ सरफेस पे. एज ए रिजल्ट ऑफ इट अर्थक्वेक ऑकर होता है. Okay, but what this energy is, what waves are produced, what shaking of earth, this all we have to read out, we have to study out. Okay बेटा, अर्थ जो है एक्चुअली, अर्थ क्या है एक्चुअली बेटा, मैं आपको समझाऊंगा. अर्थ इज जस्ट, इट्स नॉट ए कंप्लीट, इट इज ए स्फीयर, इट इज नॉट ए होल. मतलब ऐसे स्फीयर, एक ही स्फीयर नहीं है. इट इज नॉट जस्ट ए वन पीस ऑफ स्फीयर, मतलब लाइक दिस. ओके, दिस इज एक्चुअली नॉट लाइक दिस. अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, इट्स नॉट लाइक द वन होल स्फीयर, वन कंप्लीट वन पीस स्फीयर. नो, इट इज एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ जायंट पजल पीसेस. जायंट पजल पीसेस मतलब गो तम लकट लकट खांट ही मन वनान. ओके, ऐसे 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 करके, ठीक है. ओके, दे मूव अबाउट. अब ये जो जायंट पीसेस है, अब आपको पता है अर्थ के थ्री मेन लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. दीज लेयर्स जो है, दे आर प्लेस्ड ऑन हॉट, जिसको हम पार्शली मोल्टन स्टेट कहते हैं. कौन सा लेयर है वो? दैट इज द मेंटल.
Okay, that means this layer, this giant puzzle pieces, they are placed on the mantle, on their switch, they are located on which layer of the earth? That is the mantle layer of the earth. That means, being the viscous nature of the mantle state, viscous मतलब क्या है उसको गुबर, that is the semi liquid. Okay, these plates, these pieces are called as tectonic plates. Okay, so earth is actually consisting of giant puzzle pieces, which is not one pieces. There are about 19 to 20 these tectonic plates. Okay, they are placed on hot partially molten state, that is called as mantle. Being the viscous nature of the mantle, they keep on moving, they keep on moving, but the movement is not identified by us. Okay, in about 1 year they keep about 1 to 10 centimeter. Okay, एक साल में they move about 1 to 10 centimeter, their movement is about 1 to 10, which is quite slightly, very much, very less. Okay, these tectonic plates move, there is the movement of the tectonic plates. Okay, whenever, okay, अब इनकी जो मूवमेंट होती है बेटा, as as more number of more as this, whenever there is the movement of the tectonic plates, ये क्या करते हैं, ये movement of the tectonic plates, they cause slight stress. ओके, अब ये जो है, ये कॉज करते हैं, देयर इज द रिजल्ट ऑफ formation of the stress, formation of the stress due to the movement of the tectonic plates, there is the process of formation of the stress, they cause stress, on which they cause stress on the top surface, on the top layer of the earth, that is the crust. और गेटिंग मी, जिसकी वजह से ये प्लेट्स में क्या होती है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, जिसकी वजह से जब ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, स्ट्रेस इज एक्चुअली द फोर्स अप्लाइड अपॉन अपॉन एरिया. ओके, द सॉलिड्स में ज़्यादा, वी हैव डिस्कस दिस इन फोर्स एंड प्रेशर, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज एक्चुअली डेवलप्ड इन मोस्टली इन द सॉलिड्स. अब ये जहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, देयर इज़ द एक्सर्शन ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रेस के डेवलप करने से फ्रिक्शन आती है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन दिस वेन एवर देर. अब एनर्जी प्रोड्यूस करने से समटाइम्स दे स्पीड अप their movement of the part molten, their movement of the tectonic plate speed up की वजह से क्या होता है, speed up की वजह से they release more and more energy, they release more and more energy. Are you getting me? When they release more and more energy, there is the production of waves, there is the production of waves, that means these generate waves. उन waves को हम क्या कहते हैं, P and S waves, P and S waves, primary and secondary waves. Okay बेटा, जिसकी वजह से when they travel in all the directions, they travel in all the, I will show you like this. Suppose the earth, this is the crust, this is the lithosphere, and यहाँ पे क्या है, suppose this is the point at which the intensity of the energy is quite high. As a result of it, there is the प्रोडक्शन ऑफ द वेव्स, देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ वेव्स, जिसकी वजह से एनर्जी की वजह से, जिस एनर्जी की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. एज दे ट्रैवल, एज दे इमर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, देयर इज द, एज दे इमर्ज, जब यहाँ से निकलते हैं ना ये वेव्स, दोज आर कॉल्ड एज पी वेव्स, दोज आर कॉल्ड एज, वेन एवर दे स्ट्राइक द सरफेस, whenever they strike the surface hard rock, they वहाँ से भी waves produce करते हैं, those are called as S waves, those are called as S waves. Okay बेटा, अब इन S waves की वजह से, इन S waves की वजह से क्या होता है, there is the shaking of the earth's surface, there is the shaking of the earth's. ये डिटेक्ट कौन करता है, ये P and S waves कौन डिटेक्ट करता है, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज seismogram. This is the instrument that is usually used to detect the waves produced by the earth's by this earth's surface. Okay, inner surface of the crust. What is that instrument called as seismogram. Okay beta, and the study of earthquake is called as seismology. Seismology is the study of
earthquake seismology. What is the seismology? It is the study of earthquake. Okay, and when we're dealing with the study of earthquake, that the study that is called as seismology. Okay beta, so see, इनको हम seismic waves भी कहते हैं. They constitute seismic waves. जिस इसी से इनको नाम पड़ा फिर seismic waves, seismology. And what is the seismology concept? It is the study of what? Earthquake. Okay, as soon as the waves get generated, when waves generate on the surfaces, they strike the hardened part, they strike the rocks. As a result of it, there is the production of vibrations. There is the production of vibrations, जिसकी वजह से सरफेस क्या करता है? वाइब्रेट करा जाता है और हमें क्या दिखता है? अर्थक्वेक दिखता है. Okay beta, and this is the point at which the earthquake occurs inside the earth. The point at which the earthquake occurs inside the earth, that is called as hypocenter. This is called as hypocenter. Okay beta, so what is hypocenter? Hypocenter, it is the point at which the earthquake occurs inside the earth. Okay, and exact place, अगर हम exact place इसके above, exact place on the surface of earth, the place, are you getting me? Exactly above the hypocenter. Okay, exactly above the hypocenter. याद रखो ये hypocenter क्या होता है? Hypocenter is the point at which the earthquake occurs under the earth, beneath the earth, that is called as hypocenter. And exact place above it, above hypocenter, at the surface of earth, at the surface of, that is called as epicenter. So epicenter जो होता है वो on the surface of earth होता है. It is the point on the surface of earth, not inside the surface of, inside the structure, inside the earth. It is the point on the surface of the earth. It is the point on the surface of the earth exactly above the hypocenter. What is hypocenter? It is actually the point at which the earthquake occurs inside the earth. ओके बेटा, सो जिसकी वजह से इन वेव्स की वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है, उन वाइब्रेशंस की वजह से दैट रिजल्ट्स इन द शेकिंग ऑफ द अर्थ, इंटेंस शेकिंग ऑफ द अर्थ. एंड दिस शेकिंग इज कॉज एक्चुअली देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स आउटरमोस्ट लेयर. Okay, when there is the movement of earth's outermost layer, that we call as earthquake, आया थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में, आपको आइडिया आया. सो अगर हम डेफिनेशन की अब बात करेंगे, जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई, जस्ट गो टू द डेफिनेशन नाउ. अर्थक्वेक्स आर काज्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी that generate waves which travel in all directions, causing the shaking of earth's surface. Okay, an earthquake is an intense shaking of earth's surface. This shaking is caused by the movement in the earth's outermost layer. Okay, so what is hypocenter? Hypocenter is the center at which the earthquake occurs inside the earth. What is the epicenter? It is the point on the surface of the earth, on the surface of the earth. Okay, exactly, its place is exactly below the hypocenter, exactly above the place above the point above the hypocenter on the surface of earth is simply called as epicenter. Okay, अब earthquake डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ earthquake. मैग्नीट्यूड मतलब को कितना इंटेंस होता है ये earthquake बेटा. एक स्केल होती है जो मेजर करती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ earthquake. That is called as Richter scale. What is now Richter scale? Richter. Richter scale. This is the scale which usually determines the intensity of the earthquake. Magnitude. This usually determines the magnitude of, yes, this scale usually determines the magnitude of the intensity of earthquake. How much earthquake is intense, whether moderate, whether intense, whether less intense, whether minor. Okay, सो अर्थक्वेक जो है उसको मेजर करने के लिए एक स्केल आई जाती है, एक स्केल होती है, दैट इज कॉल्ड एज रिक्टर स्केल. अब रिक्टर स्केल क्या है? इट इज द स्केल वेयर इन देर आर नंबर्स. दिस इज द स्केल रेंजिंग फ्रॉम द नंबर 0 to 10.
ओके बेटा, 0 to 10. ओके, अगर 0 to 2 वैल्यू आया, दैट मीन्स इट मेजर्स दीज वेव्स, इट मेजर्स द वाइब्रेशंस, मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर। ओके बेटा, कहीं पे अगर आपने देखा होगा कि हाँ, आज को जो अर्थक्वेक था, अल्लाह ताला बचाए, आज को जो अर्थक्वेक था, इसका जो मैग्नीट्यूड था दैट वाज अबाउट 4.7. व्हाट इज दैट 4.7? आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर 0 to 2 मैग्नीट्यूड आया, दैट मीन्स इट्स बेयरली, मतलब अब हम उसको क्या कहेंगे, बेयरली सीवियर, मतलब इट विल नॉट कॉज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, देर इज स्लाइट, जो आपको लगेगा भी नहीं अर्थक्वेक है कि नहीं। ओके बेटा, अगर वैल्यू क्या निकला, 0 to 2। अगर स्केल का वैल्यू 2.2 to 4 आया, ओके, 2 to 4 मीन्स माइनर वाइब्रेशंस, माइनर वाइब्रेशंस। ओके बेटा, अगर 4 to 5, if there is 4 to 5 वैल्यू कम आउट फ्रॉम द रिक्टर स्केल, उसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल और लाइट अर्थक्वेक। ओके बेटा, अगर 5 to 5.9, there if 5 to 5.9 comes out, this is called as moderate earthquake, moderate earthquake। ओके बेटा, अगर 6 to 6.9 आया, that is called as strong earthquake। अगर above 7 आया, that is the major earthquake, major earthquake। Okay beta, so 2 to 4 is the minor vibrations, you can feel the vibrations but it won't affect it, it will not cause any sort of damage. 4 to 5 is the small light earthquake, you will feel the earthquake but it will not cause also some damage, it will not cause slight damage कर सकता है, मतलब थोड़ा सा डैमेज, मतलब इन द फॉर्म ऑफ, अगर कोई पुराने बिल्डिंग्स होंगे, दोज आर मेड ऑफ द मड वर्ड, they can just come under this influence। Okay, 5 to 5.9 same is the case, moderate earthquake, you can feel the earthquake। Okay, there is no loss of damage and there will be no loss in the form of lives as well। अगर 6 to 6.9 आया, maybe here cracks may find in the buildings, in the small buildings, large buildings may resist but the small buildings there will be some cracks found in the small buildings। And what about this magnitude, if it comes more than 7, it is going to be the major earthquake, Allah Ta'ala Bhajan, 7, 8, 9, so do that is the severe earthquake that will cause a lot of destructions, whether as from the structural part as well as from the human part। Okay, अभी तक सबसे खतरनाक devastating earthquake that have come to up to now, that occur in Valdivia, Chile in 1952। ओके, उसका जो मैग्नीट्यूड था दैट वाज 9.5, 9.5, इट केम इन 1952। सेकेंड अर्थक्वेक इसके बाद जापान में आया था, मार्च, आपको पता होगा दैट मार्च 2011 में, अबाउट 9.0 मैग्नीट्यूड इट, एंड इस अर्थक्वेक की वजह से ऑलमोस्ट 6,000 लाइव्स हैव बीन अफेक्टेड, मतलब 16,000 ह्यूमन्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। ओके, एंड बहुत ज़्यादा डैमेज भी हुआ एज फार एज द स्ट्रक्चरल concept structures as concerned। Okay, so this was all about the Richter scale। So what is Richter scale? It is the scale that usually measures the magnitude of the earthquake, intensity of the earthquake। It varies from the number 0 to 10। ओके, आपको अब फिर 0 to 2 क्या है, दैट इज़ द बेयरली सीवियर, 2 to 4 सेम वे, 4 to 5 स्मॉल लाइट, 5 to 5.9 moderate, 6 to 6.9 strong, more than 7 is the major earthquake that will be quite devastating। Okay, so this was all about the earthquake and seismology। What is the seismology? Seismology, it is the study of earthquake। What is seismogram? It is the device that usually detects these waves, P waves and S waves। What is hypocenter? It is the point at which the earthquake occurs under the earth, that is called as hypocenter, and the place exactly above the exactly above it, above the hypocenter, is called as epicenter। Okay, अब आपने
ये देखा होगा कि एपी सेंटर जो होता है, आप कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि इसका एपी सेंटर कहाँ हो था, इस अर्थक्वेक का एपी सेंटर कहाँ हो था. दैट वाज इन अफगानिस्तान, दैट वाज इन जापान. ओके, व्हाट इज दैट एपी सेंटर? इट इज द प्लेस अबव द हाइपोसेंटर. ओके, दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. एंड अर्थक्वेक जो है बेटा, इसका जो इन्फ्लुएंस होता है, दैट इट इन्फ्लुएंसेस एवरीबडी, वेदर फ्रॉम द एनिमल पार्ट, फ्रॉम द ह्यूमन पार्ट, फ्रॉम द बिल्डिंग्स पार्ट. ओके, देयर इज इट काज डेवास्टेशन. अर्थक्वेक को डिटेक्ट कौन करता है? पहले पहले डिटेक्ट करता है अर्थक्वेक एनिमल्स. एनिमल्स वियर्ड बिहेवियर शो करते हैं. ओके बेटा, मतलब दे बिहेव क्वाइट एबनॉर्मल इन दैट केस. इनको पता नहीं, ये दे फील द वेव्स, दे फील द वेव्स फर्स्ट, जिसकी वजह से दे बिहेव क्वाइट वियर्डली. As a result of, we say something is going to happen, something devastating, Allah forbid, is going to happen. Okay beta, so this was all about your earthquake concept. We have completed the topic, some natural phenomena. There's one topic left in this chapter, that is the do's and do not. That means हम क्या करने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है during the earthquake. That I'm going to give you the page, and that I'm going to send this in your WhatsApp group. And that's quite easy. वो आपने बस पढ़ना है और बस. With this we have completed the topic, completed this chapter as well, that is the earthquake and some natural phenomena. Thank you.